Hello, you're watching Hornbill TV's Primetime Bulletin. Now headlines. Israel carried out fresh strikes in Gaza on Saturday, killing 6 people just hours after US President Donald Trump directed an end to the bombardment and announced that Hamas was ready for peace. Japan's former economic security minister Sanai Takaichi was selected leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party in a vote on Saturday. She is set to become the first female Prime Minister of Japan on October 15. The Union Health Ministry has issued an advisory to all states recommending the rational use of cough syrup, stating it should not be given to children under 2 years of age. Hamas on Friday agreed to release all Israeli hostages, whether dead or alive, in response to the 20-point Gaza peace plan introduced by US President Donald Trump earlier this week. Now for the news in detail. Singer Zubeen Garg was poisoned in Singapore, and his manager Siddharth Sharma and festival organizer Shyamkanu Mahanda had deliberately chosen a foreign venue to conceal the conspiracy, the late singer's bandmate Shekhar Jyothi Goswami has alleged, according to official documents with the police. Both Sharma and Shyamkanu Mahanda have been arrested by police as part of the probe into the death of the famous singer. Shekhar Jyothi Goswami and co-singer Amrit Brava Mahanda have also been arrested in the case. Well, according to detailed grounds of arrest, remand note, Shekhar Jyothi Goswami alleged that a conspiracy was hatched to portray his death as accidental. Zubeen Garg passed away in Singapore on September 19 after an alleged drowning incident. The singer was in Singapore for the Northeast India Festival. Goswami alleged that Siddharth Sharma, who stayed with him in a Singapore hotel, had displayed suspicious conduct. Assam Police SIT is probing the case of mysterious death of Zubeen Garg in Singapore. Special DGP CID Munna Prasad Gupta is leading a 10-member SID probing the case. Under the chairmanship of Chief Election Commissioner Ganesh Kumar, discussions were successfully held with all the recognized political parties of Bihar, along with election commissioners Dr. Sukhbir Singh Santu and Dr. Vivek Joshi, Chief Electoral Officer of Bihar Vinod Singh Kunjal, and senior officers of the Commission. During the interaction, the Election Commission stated that political parties are the cornerstone of democracy and that all parties should ensure their participation at every stage of a transparent electoral process. The EC urged voters to celebrate the festival of elections with harmony and respect and to experience the transparency of the elections. It also urged political parties to ensure that they nominate polling agents at every polling booth. Political parties thanked the EC for taking historic, transparent and firm measures to purify the electoral rolls through the special intensive revision and reiterated their complete commitment and faith in the electoral process. They also thanked the EC for setting a maximum number of voters per polling station at 1,200. Moreover, representatives from various political parties demanded that the elections be conducted immediately after the Chhath festival to ensure maximum voter participation, and suggested holding the elections in as minimum phases as possible. The Pakistani government and the Awami Action Committee have reached a reconciliation in Pyoge, Pakistan-occupied Kashmir. The government has accepted 21 out of 38 demands from the protesters. Following these, demonstrations against the government will end, and for the next 3 days, the Awami Action Committee will hold mourning processions for those who died during the protests. Under the settlement, those responsible for violence and the deaths of protesters will face prosecution under anti-terrorism laws, and a judicial inquiry will be conducted. Families of deceased protesters will receive compensation equal to that of government employees. One family member will be given a job within 20 days, and the injured will receive financial aid of 1 million rupees each.
2 new education boards, an intermediate board and a higher secondary education board, will be established in BOK, and all existing boards will be connected with Pakistan Central Education Board within 30 days. In the case of the Mangla Dam project, extended families of Mirpur district will be allotted land within 30 days. The BOK government will release funds for implementing the health card scheme within 15 days. Pakistan will also allocate 100 million rupees to improve BOK's power supply system. The BOK government will be limited to 20 ministers and advisors. 2 tunnels will be built in BOK with assistance from the Saudi Development Fund. Israel carried out fresh strikes in Gaza on Saturday, killing 6 people, just hours after U.S. President Donald Trump directed an end to the bombardment and announced that Hamas was ready for peace. Well, according to local authorities, one Israeli strike hit a house in Gaza City, killing 4 people, while another strike in Khan Yunis in southern Gaza killed 2 others. The attacks came shortly after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's office said Israel was preparing for an immediate implementation of the first stage of Trump's Gaza plan, which involves the release of Israeli hostages following Hamas' response. Israeli media later reported that the country's political leadership had instructed the military to reduce offensive operations in the enclave. Prime Minister Narendra Modi on Saturday also welcomed U.S. President Donald Trump's role in the emerging Gaza peace framework. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav on Saturday offered prayers at Kamakhya Temple in Guwahati, Assam, and sought the blessings along with his wife. CM Yadav arrived here to participate in an interactive session on investment opportunities in Madhya Pradesh program, which is scheduled to be held in Guwahati on Sunday, October 5. The Chief Minister will hold one-to-one meetings with investors and businessmen from the northeastern region and discuss them about investing in Madhya Pradesh. CM Yadav emphasizes that Madhya Pradesh too has elephants, and Kaziranga National Park here is known for elephant management. Therefore, he will visit Kaziranga as well to understand about the management of the elephant and other things. मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट की दृष्टि से हम अपना इन्वेस्टमेंट के लिए पूर्वोत्तर में कल यहाँ रोड शो करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों में मध्य प्रदेश और असम और मध्य प्रदेश में व्यापार की बड़ी संभावना है सभी क्षेत्रों में। ऐसे में आज मैं यहाँ माँ के दर्शन करने भी आया हूँ, और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी हाथी आ गए हैं अब अपने यहाँ। तो काजीरंगा में बहुत अच्छे से एलिफेंट के टूरिज्म की दृष्टि से, खासकर वन्य प्राणी में टाइगर स्टेट तो हमारा है ही, लेकिन हाथियों की बड़ी संख्या होने से भविष्य में उनका प्रबंधन कैसे करें, हमारे वन्य प्राणी को जानने वाले जिज्ञासुओं का पर्यटन के माध्यम से, वन्य पर्यटन से उनको कैसे जोड़ें, ऐसे बहुत सारे विषय को लेकर के आज मैं यहाँ काजीरंगा भी जाने वाला हूँ, और कल यहाँ के व्यापारियों से बात करके मध्य प्रदेश और आसाम के बीच व्यापार व्यवसाय का संबंध कैसे बढ़े, अलग अलग क्षेत्र में बहुत संभावना। मैं कल सीएम से भी मिलने वाला हूँ। हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोनों राज्यों के और संबंध मजबूत हो इस दिशा में काम करेंगे। We'll take a short break, so stay tuned. तुम्हारा नाम क्या है? You can get HIV through transfusion of HIV-infected blood. Take blood only from licensed blood banks. तुम्हारा नाम क्या है?
Welcome back. Japan's former Economic Security Minister Sanai Takaichi was elected leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party in a vote on Saturday. She is set to become the first female Prime Minister of Japan on October 15. Takaichi received 185 votes, while Koizumi garnered 156 in a runoff after none of the 5 candidates in the party leadership race secured a majority in the initial round of voting. The contest focused on issues such as cooperation with opposition parties, economic measures to tackle rising prices, and rebuilding the party after successive election defeats and political funding scandals. Takaichi, a 64-year-old newscaster turned politician who has served in top government positions on Saturday, defeated 4 other candidates, all men, to win the leadership of the ruling Liberal Democratic Party. This is her 3rd run at the party leadership post. Takaichi's election ends Ishiba's term as president of the LDP, but he will remain Prime Minister until his successor is formally selected at a parliamentary session, probably on October 14. A 27-year-old Indian student has reportedly been shot dead in Dallas, US. Chandrasekhar Paul, who was from Hyderabad, was working at a gas station last night when he was killed by an unidentified gunman. Paul had moved to the US in 2023 for higher studies after finishing his bachelor's in dental surgery back in Hyderabad. He completed his master's degree in the US 6 months ago and had been looking for a full-time placement while working part-time at a gas station. The student's family has sought the government's help in bringing back their son's body from the US. BRS MLA Sudhir Reddy and former Minister T. Harish Rao visited the student's home in Hyderabad and met his family today. Calling it a tragic incident, he has urged the government to take immediate steps to bring back Paul's body to his hometown. Hamas on Friday agreed to release all Israeli hostages, whether dead or alive, in response to the 20-point Gaza peace plan introduced by US President Donald Trump earlier this week. In this context, the movement reaffirms its readiness to immediately enter into negotiations through the mediators to discuss the details of today's agreement, Hamas said in a statement released on Telegram. The group also agreed to hand over the Gaza administration to an independent Palestinian technocrats body based on Palestinian national consensus and Arab and Islamic support. Other issues mentioned in President Trump's proposal regarding the future of the Gaza Strip and the legitimate rights of the Palestinian people are connected to a unified national position and relevant international laws and resolutions, the statement said. They will be addressed through a comprehensive Palestinian national framework in which Hamas will participate and contribute responsibly, the statement added. The development comes after the United States President Donald Trump on Friday issued a stern warning to Hamas, saying the militant group is militarily trapped and has been given a last chance to agree to a peace deal endorsed by regional and global powers. During the launch of the nationwide Aapki Punji Aapki Adhikar awareness campaign on unclaimed financial assets, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman appealed to citizens to become ambassadors of the initiative. She urged people to reach out to their contacts and check if they have any unclaimed assets in the financial sector and to guide them towards registering on the official portal to claim what is rightfully theirs. Sitharaman said this campaign will ensure that ordinary citizens, people like you, me and all of us, receive much needed support by retrieving the rightful money. She called upon everyone to spread awareness so that more people can benefit from the scheme. And therefore today, I would think every one of you who are in this audience, if you can become the ambassadors to propagate to some people who you know, hey, I attended this program, आपके यहाँ कहीं कुछ पेपर पड़ा हुआ है क्या, देख लो, आपके परदादा दादा ने कुछ छोड़ कर गए, कागज निकालो और रजिस्टर करो पोर्टल। ये जानकारी अगर आप
विस्तृत रूप में स्प्रेड करेंगे, हम जैसे बहुत सारे लोग, आप जैसे बहुत सारे लोग, इन जैसे बहुत सारे लोग को उससे बहुत लाभ मिलने का संभावना है। सो मैं आपसे, आप सबसे विनम्र पूर्वक ये आश्वासन और ये एक्सपेक्टेशन रख रही कि आप जरा इसका, आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं उनसे ये बात जरूर बताइए कि ऐसे प्राप्त कर सकते हैं जो आपके हक है। सो दैट इज अबाउट अवेयरनेस। व्हाट इज द अदर ए? The Union Health Ministry has issued an advisory to all states recommending the rational use of cough syrup, stating it should not be given to children under 2 years of age. Meanwhile, the Union Ministry of Health and Family Welfare has confirmed the presence of datolene glycol or DEG much beyond the permissible limits in cough syrup samples which were manufactured by Sri San Pharmaceutical. Earlier, it stated that a total of 6 samples were collected by CDSCO which were tested, and all 6 were found to be free of DEG-EG. Simultaneously, MPFTA had informed that out of 13 samples collected by their team, 3 were analyzed which were found to be free of DEG or EG. At the request of the MP government, Tamil Nadu FDA had taken samples of cold reef cough syrup from the manufacturing premises of MS Sri San Pharma in Kanchipuram, Tamil Nadu. The results of testing these samples showed that these contained DEG beyond the permissible limit. Meanwhile, risk-based inspections have been initiated at the manufacturing premises of all 19 drugs sampled spread across 6 states. Additionally, the multidisciplinary team is still analyzing various samples and factors to assess the cause of deaths in and around Chhindwara, Madhya Pradesh, it said. DEG contamination means the presence of datolene glycol, a toxic industrial chemical in products that are not meant to contain it, such as pharmaceuticals. It occurs when DEG is used as a cheaper substitute for safe diluents like pharmaceutical grade glycerin or propylene glycol, and its ingestion can cause severe health issues including kidney failure, neurological damage and death. तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग थी, तो वो टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद उसको पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। जो भी उसका स्टॉक था वो सीज कर दिया गया है और इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए। सर, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पार्टी फूड डिपार्टमेंट के जो अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होंगे? यही कि पूरा इंस्पेक्शन करें, जहाँ जहाँ इसका सप्लाई हुआ है हर पेरीफेरी में जाएं, हर शॉप पे जाएं, मेडिकल स्टोर पे जाएं, जहाँ जहाँ इसकी सप्लाई हुई है और उसकी सैम्पलिंग करें, उसकी जब्ती करें। सर, जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कुछ निकला है? कंटेंट क्या जहरीला था उसमें? जो उसमें मेनली कंटेंट था डाई इथिलीन ग्लाइकोल का। वो 0.1% परमिटेड है, पर वो मोर देन परमिटेड लिमिट था, इसलिए ये कंटेमिनेटेड पाया गया। इसको एडल्ट्रेट होने के कारण संपूर्ण मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया। सर, उसका कोई बैच नंबर भी है? आपने 13 कुछ करके? हाँ, बैच नंबर है, बैच नंबर SR13। तो उसको पूरे को बैन कर दिया गया। और आगे सर क्या किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? आगे उस मेडिसिन का यदि और भी कोई बैच है तो उस पर भी प्रतिबंध है, उसको भी देखा जा रहा है। यदि कहीं है तो उसको सीज किया जाएगा, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, आपको नहीं लगता कि ऐसे 2 सिरप की सर थी, एक ही सिरप पे ये लगा है, लेकिन वहाँ पे जब छिंदवाड़ा कलेक्टर ने स्टार्टिंग में 2 सिरप को, हाँ, दो सिरप है, एक की अभी टेस्टिंग हो रही है, एक हिमाचल की मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ भी टेस्टिंग हो रही है। हम अवेट कर रहे हैं, उसके लिए भी जैसी रिपोर्ट आएगी हम तुरंत एक्शन लेंगे। सर, आपको नहीं लग रहा कि इसमें देरी कुछ हुई है? क्योंकि पहले 6 बच्चों की मौत हुई, फिर 3 बच्चों की भी मौत हो गई अभी। और सैम्पलिंग की कार्रवाई और सैम्पलिंग की जांच चूँकि लेबोरेटरी में ही हो सकती है, तो वो चल रही है। वो उसका एक प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, वो फॉलो करना पड़ता है। 19 सैंपल उठाए गए थे, 19 में 13 सैंपल हमारे पास हैं जिनकी जांचें चल रही हैं।
और सैंपलिंग का एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करके ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। अभी कितने सैंपल की जांच रिपोर्ट आ गई है सर? 3 की आ गई है और एक ये तमिलनाडु से जांच रिपोर्ट आ गई है, बाकी जांचें हो रही हैं। टोटल 4 की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें से एक में कंटेंट हाँ गड़बड़ पाया गया, विषैला पाया गया, जिसको लेकर प्रतिबंधित कर दिया जी। सर कौन सा कंटेंट है एक बार फिर बता दीजिए। ये डाईएथिलीन ग्लाइकॉल। सर इससे क्या मतलब क्या कुछ निकल के आएगी, किससे किडनी फेलियर की मतलब वजह बन जाता है या फिर विषैला होता है जहरीला? नहीं, उसका जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज़्यादा होने पे जाहिर है। We'll take another short break, so stay tuned. तुम्हारा नाम क्या है? 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। तुम्हारा नाम क्या है? Welcome back. Karnataka LOB and BJP MLA R. Ashoka on Saturday criticized the Congress government over its handling of flood and crop damage in the state. Speaking to reporters here, R. Ashoka said that around 10 to 12 lakh hectares of crop have been damaged due to rain in the state, but the government has not provided compensation yet. ನಾವು ಮಳೆ ಹಾನಿ ಆಗಿರೋ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ರೀತಿ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೀರು ಬಂದೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಷ್ಟು ಜಮೀನಿಗೆ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು, 52,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. 52,000. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನ ಇಲ್ದಿರ, ಅಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ದಿರ, ಜನ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ BJP ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ 2 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ನೆನ್ನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು, 2 ರೈತರು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ನೀವು ಮಾಡಿದ ಮೋಸಕ್ಕೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ, ರೈತರ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಏನು ಪ್ರವಾಹ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನೀರು ಬಂದಿರೋದು ಹಂಗೆ, ಕಬ್ಬು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಿಂತಿದೆ, ತೊಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಿಂತಿದೆ, ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದೀರಾ? 33 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು 2 ದಿನದಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು
ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರಲೋಕನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಭೂಮಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಚಂದ್ರಲೋಕನ ನೋಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಭೂಮಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈತರು ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವರು ಮೇಲಿಂದ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಜನ ಗೆರವಾಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಇಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ನಾನು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಿಹಾರನೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇಸ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ತೋರಿಸೋ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಭೂಮಿ ತೋರಿಸೋ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರೈತರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಕೊಳ್ಳಿ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರದ ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ಸರ್ ರೈತರು. ಈಗ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, NDRFಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ನಾನು ಸವಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಮ್ಮಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು? ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಒಣ ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು? ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು? ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು? ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇದ್ದದ್ದು 2 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು, 3 ಲಕ್ಷ. ಇವತ್ತು 4 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇದೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಅವತ್ತು ತೊಗರಿಗೆ BJP ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಸವಾಲು ನಂದು. ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಮನೆಗೆ BJP ಅವರಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು, ನೀವೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಮ್ಮಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ? ತಾಕತ್ತಿದೆಯಾ? ಹೇಳಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. That's all for now. Keep watching HORNBILL TV.